Everyone, welcome to Unacademy. Let's start today's session. बच्चे ज्वाइन होते जाएंगे फटाफट. Let's start. Okay, चलो. मेरा बहुत brief introduction guys. I'm Ashish Kumar. Got 9+ years of teaching experience. Yes, and this is my Educator discount code. आप ये यूज कर सकते हैं ऐप में किधर भी जहाँ भी पूछ रहा है. Okay. Also, we the plus pricing is as follows. एक साल का it comes in 20 to 550, 10% standard discount आपको सब पे मिल जाएगा. ड्यूरेशन आप आपके हिसाब से चेकआउट कर सकते हो. ओके. अगर आपको 1:1 स्टफ चाहिए, पर्सनलाइज स्टफ चाहिए, डाउट क्लियरिंग सेशन, कंसेप्ट डिस्कशन एंड ऑल, you'll have to go with Iconic. 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको. अगेन ड्यूरेशन आप आपके हिसाब से चेकआउट कर सकते हो. 6 months, 12 months, 24 months, whatever you need, you can check that out. Guys, on plus we launch multiple batches every week, as you can see, and we do cater all the slots possible, all the category of students possible. ये सनराइजर्स बैच है, मॉर्निंग में होगा. वीकडे इवनिंग बैच है, कुछ बैचेस वीकेंड पे भी होते हैं. So there is purpose for launching all these batches. We don't want you to miss any of any part of your preparation. आप जब भी free हो, we have a batch in that particular timing. Scholarship test, guys. Next scholarship test is on 6th of February. Do attempt it completely free of cost, and we have some amazing prizes in offering for the same. And same goes with Cat Combat. Cat Combat कब है? 30th January. Attempt this as well. 12 p.m. is the timing. This is also a test which is completely free of cost. One last notification: if you have scored more than 80 percentile in CAT 2021, we are offering 30% scholarship on your plus subscription if you are preparing for CAT 2022. You can check this out as well if you are a repeater. Chalo, try this. Try the first question. How many numbers between 5,000 and 7,000 can be formed using digits 3 to 9 when any digit can occur any number of times? When any digit can occur any number of times. Try this. Good morning जी बेटा. 6:43 a.m. I mean, आप जो कर रहे हो एक तो वही सही नहीं है, ऊपर से इतनी लगन के साथ मॉर्निंग 6:45 गुड मॉर्निंग जी. क्या है? So how many numbers between 5,000 and 7,000 can be formed using digits 3 to 9 when any digit can occur any number of times? Any digit can occur any number of times. Guys, answer this question. You have roughly 1 minute. How many numbers between 5,000 and 7,000 can be formed using the digits 3 to 9 when any digit can occur any number of times? Chalo, let's attempt this one. 5,000 to 7,000 है ना? 1, 2, 3, 4. Okay. So 5,000 to 7,000, फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? फर्स्ट डिजिट के लिए इट कुड बी इधर 5 और 6. 7 should not be included because the numbers that we are expecting is between 5,000 and 7,000. 7,000 नहीं चाहिए. Sashwata Das says E. नहीं बेटा, E is not the right answer. So first position के लिए you have two options, either 5 or 6. Okay. Second, third and fourth के लिए, second, third and fourth के लिए you have 7 options each. Anything from 3 to 9. Correct. 1, 2 और 0 नहीं चलेगा. Anything from 3 to 9. So your answer should be 2 into 7 into 7 into 7. 343 into 2. 686 should have been your answer. Okay. Am I clear with this? Yes, sir. You are clear with this. Try this.
Try the next question. All possible four-digit numbers with distinct digits are formed using the digits 1, 3, 4, 5, 6. How many of them are divisible by 5? How many of them are divisible by 5? All possible four-digit numbers with distinct digits are formed using the digits 1, 3, 4, 5, 6. How many of them are divisible by 5? So you're saying C. Okay. देखो 1, 2, 3, 4. Last के लिए you have only one option. You want 5 over here. Okay. And बाकी चार में से कोई भी तीन यहाँ चलेंगे. So let's select 3 out of 4. 4C3. And then उनको अरेंज भी करना पड़ेगा ना. अरेंज भी करना पड़ेगा. Yes sir. So the answer should be 4C3 into 3 factorial into 1, which is 4 into 6 into 1, 24 was the right answer. C was the right answer. Try this next question. Yes, try this next question. The third one. Hashtag 3 and then their answer. A question paper consists of 5 problems, each problem having 3 internal choices. In how many ways can a candidate attempt one or more problems? In how many ways a candidate attempts one or more problems? Hashtag 3 and then their answer. In how many ways a candidate attempts one or more answer? Rajat says hashtag 3 ka C. Okay, so there are 5 problems now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कितना वे है? यू हैव थ्री ऑप्शंस. ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है और हो सकता है आप नहीं मार्क करो. सो देयर आर 4 वेज पॉसिबल. यू कैन मार्क ऑप्शन ए बी सी और यू कैन नॉट मार्क द क्वेश्चन. वो भी एक ऑप्शन है ना. सिमिलरली सेकंड के लिए भी 4, थर्ड के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी 4 एंड फिफ्थ के लिए भी 4. सो टोटल पॉसिबिलिटीज इज 4 raised to the power 5, बट इसमें 1 माइनस करेंगे ना. देर इज वन केस कंसिडर्ड जहां पे आपने किसी में कुछ भी नहीं मार्क किया, वो माइनस करना है. बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन. You are going to attempt at least one question. So answer is 4 raised to the power 5 minus 1, which is 4, 16, 64, 256, 5, 1 not 24. Okay, minus 1, that's 1 not 23. 1 not 23 was the correct answer to the question. Chalo, next one. Using all the letters of the word Thursday, how many different words can be formed? फटाफट बताओ. Easy है ये तो straight away formula. Using all the letters of the word Thursday, how many words can be formed?
रजत सेज 4 का बी, 8 words है ना, 8 alphabets and all of them are different, so 8 factorial is straight away, 8 factorial is straight away. ठीक है, चलो आंसर दिस क्वेश्चन, इसी में आई लास्ट समथिंग एल्स. ठीक है, और हम how many words are formed in which T is always followed by H. Answer this. How many words are formed in which T is always followed by S? इसको क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो. चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो, 5 का आंसर दो. In which T is always followed by H. Using the letters of the word Thursday, how many different words can be formed in which T is always followed by H? सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, ऐसा है क्या? T is always followed by H. 7 into 6 factorial. Sashwata is saying 6 factorial. Thursday है ना, THURSDAY. आपको T हमेशा T के बाद H चाहिए. ठीक है, मतलब ये दोनों साथ में चाहिए ना, ये दोनों साथ में चाहिए. ठीक है, ओके. तो कितना हो गया ये? इसको 1 यूनिट असूम कर लो. 1 and then 2, 3, 4, 5, 6, 7. डोंट यू थिंक इट इज 7 फैक्टोरियल? जितने तरीके से 7 आप अरेंज कर सकते हो. ठीक है, 7 into 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. यस रजत, आपका राइट है. 7 into 6 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल. 7 into 6 factorial is 7 factorial. दुष्यंत पहले ये तो आंसर दे दो, एंड जो भी आपका क्वेश्चन है पूछो, जो भी आपका क्वेश्चन है पूछो. चलो ओके, इसका तो आंसर 7 फैक्टोरियल हो गया. आपका जो भी क्वेश्चन है दुष्यंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. Using all the letters of the word Thursday, how many different words can be formed in which T is always ahead of H? Okay, एक ऑप्शन F पे पुट कर दो, none of these. ठीक है, इसका आंसर दो. ओके, एंड इफ यू से F, आपको एग्जैक्टली बताना है द फिगर. आंसर दिस. Using all the letters of the word Thursday, how many different words can be formed in which T is always ahead of H? Answer this. Using all the letters of the word Thursday,
How many words can be formed in which T is always ahead of H? How many of you are attempting this? एक बार बता दो मुझे. हाँ सर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ. हैशटैग मी लिख के. दिस विल लेट मी नो कि कोई अटेम्प्ट कर रहा भी है या नहीं. श्योर हो जाता अटेम्प्ट कर लो. इसी में क्वेश्चन ऐड कर लेना, ये भी ऐड कर लेना आप. और इसको ना, इसको 4, चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐड कर लेना. और इन विच T is always ahead of H, which is always ahead of D. ये दोनों क्वेश्चन. I have 11 hoodies, 6 sweatshirts, 7 trousers, and 6 jeans. How many days it would require to wear different pairs of items, top and bottom, if the pair is to be worn for 2 days? सेवनटीन इंटू 13 इंटू 2 नहीं होगा इसका आंसर. इलेवन हुडीज, 6 स्वेटशर्ट्स. टॉप में कोई भी एक ले लो, 17 में से 1. बॉटम में से कोई भी एक ले लो, 13:1. कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 17C1. इसका आंसर ऐसे हो सकता है ना, लाइक 17C1 इंटू 13C1. इतने पेयर्स हो जाएंगे एंड ईच पेयर हैज टू बी वर्न 2 days. आई थिंक ये होना चाहिए. टॉप और बॉटम डिफरेंट चाहिए ना, तो कितने यूनिक पेयर बना सकते हैं हम लोग? टॉप के लिए मेरे पास 11 और 6 17 ऑप्शन है. टॉप के लिए मेरे पास 11 और 6 17 ऑप्शन है. 17 में कोई भी एक ले लो. बॉटम के लिए मेरे पास 7 और 6 13 ऑप्शन है. कोई भी एक ले लो, 17C1 इंटू 13C1. और हर एक इतने पेयर्स बनेंगे. हर एक पेयर 2 दिन पहनना है, तो इंटू 2. These much days should be required. This is what I think should be the answer. So Rajat says 8 factorial by 2 factorial. किस वाले क्वेश्चन का है आंसर ये? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. What about second? What about second? Okay, what about second one? इसको क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो. चलो उसको 4 बोला तो इसको 5 बोल दो. इसको क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो. T is always ahead of H का 8 factorial by 2 factorial. Very nice. Very nice. That's correct. ठीक है. फर्स्ट वाले का पहले आंसर देखते हैं. T is always ahead of H. ओके ओके ठीक है. सबसे पहले थर्सडे. थर्सडे ना कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल. अब आप लॉजिकली बात करोगे तो इन ऑल दोज वर्ड्स 8 फैक्टोरियल वर्ड्स
किसी में टी आगे है, किसी में एच आगे है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि टी एच के इमीडिएटली आगे है, टी एच के कहीं भी आगे हो सकता है। क्वेश्चन में ये बोला था टी इज ऑलवेज अहेड ऑफ एच, मतलब कुड बी एनीवेयर अहेड ऑफ एच। तो इन ऑल दोज वर्ड्स आइदर टी इज अहेड और एच इज अहेड। नहीं, योर्स वाज राइट, इनिशियल वाज राइट, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को एक रैंडम वर्ड उठा लो, कोई भी एक रैंडम वर्ड उठा लो, ठीक है। ऐसे करते हैं वाई, ये एक वर्ड बनेगा थर्सडे में। वन ऑफ द वर्ड्स इज दिस। इसमें टी आगे है, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, एच की जगह टी लिख सकते हैं, यस और नो। ये हम हर वर्ड के साथ कर सकते हैं ना, हर एक वर्ड में एच की जगह टी, टी की जगह एच रख सकते हैं। सो आधे वर्ड्स में टी आगे हो जाएगा, आधे वर्ड्स में एच आगे हो जाएगा। किसी भी वर्ड में टी को आगे रखा जा सकता है और रिप्लेस कर दोगे तो एच आगे हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, ट्रिकी था बट हाँ सिंपल था। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वाज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। 8 factorial by 2 factorial was the right answer to the question. 8 factorial by 2 और 2 factorial, ठीक है। चलो, t is always ahead of h which is always ahead of d, ये वाला केस बोला था आपको। t is always ahead of h is always ahead of d। ओके, देखो अगेन t h u r s d a y। ओके, इसको 8 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते थे। ओके, नाउ टी हमेशा एच के आगे होना चाहिए, जो हमेशा डी के आगे होना चाहिए। केवल इन तीनों की बात करें अगर, गिव मी अ सेकंड। ओके, वेरी नाइस। बस अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। कोई भी एक रैंडम वर्ड ले लो, कोई भी एक रैंडम वर्ड ले लो, कोई भी एक वर्ड उठा लो जिसमें थर्सडे का जैसे ऐसे एक वर्ड हो गया ना, और टी हो गया, यू आर एच ए डी वाई और एस डाल दो, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया, वन ऑफ द वर्ड्स। ओके, इसमें टी एच और डी, बस इन तीनों पोजीशन को कंसिडर करो, इन तीनों पोजीशन को। ये तीनों अपने पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना। 3 फैक्टोरियल, टी एच डी हो सकता था, टी डी एच हो सकता था, एच टी डी हो सकता था, एच डी टी हो सकता था, डी टी एच हो सकता था, डी एच टी हो सकता था, इस इतने तरीके से हो सकता था, ठीक है। बट इसमें मुझे एक ही चाहिए ना, ये वाला चाहिए मुझे, टी एच डी ही चाहिए। So out of six arrangements possible, I'm looking for only one arrangement. Yes or no? Of 6 possible arrangements or 3 factorial possible arrangements, I'm looking for only one specific arrangement. And this is true for all the words. Hence, this should be divided by 6, or which is nothing but 3 factorial for your specific count. Sure. Am I clear with this? Yes, sir, you are clear with this. Try this. Find the number of ways of arranging words of the letter material such that all the vowels are to come together. Try this. Try this. फाइव का भी, ये तो इजी था ना। दिस वन इज इजी वन। मटीरियल, M A T E R I A L। यू वांट वॉवेल्स टू कम टुगेदर, एक वॉवेल, दूसरा वॉवेल, तीसरा वॉवेल, चौथा वॉवेल, ये चारों वॉवेल निकाल लो। A E I A, एक ग्रुप बना दो।
And then we have consonants. How many consonants do we have? We have M, T, R, L. So five group हो गया ना? They can be arranged in 5 ways. इसमें vowels inside can be arranged in 4 upon 2 ways. Yes, this should be the answer. जो भी आएगा, this should be the answer. जो भी आएगा, it is 1440. 1440. This should be the answer. Moving to the next question. Try this. There are 18 stations between Hyderabad and Bangalore. How many second class tickets have to be printed so that passengers can travel from any station to any station? You want them to travel from any station to any station. Answer this. Rajat says 6 ka E. Okay. So you have Hyderabad and you have Bangalore. Beach में you have 18 stations. Okay, so these are 18 stations. एक खुद हैदराबाद हो गया और एक बैंगलोर भी हो गया ना. In all, how many stations are there? 20 stations. Okay. In how many ways you can select two stations out of these 20 stations? 20 C2. Yes or no? ये कितना होता है बेटा? 20 into 19 by 2. That's 190. So 190 pair of stations can be selected. For each pair आपको 2 टिकट निकालना पड़ेगा. एक एक सपोज हैदराबाद और बैंगलोर है तो एक हैदराबाद से बैंगलोर के लिए, दूसरा बैंगलोर से हैदराबाद के लिए. फॉर ईच पेयर ऑफ स्टेशन यू नीड 2 tickets. 190 cross 2 is 380. Yep, that's the right answer to the question. The right answer to the question. Try this. In how many ways 4 girls and 5 boys can be seated in a row so that all the girls and all the boys are together? Easy है ये तो. Again, solve it quickly. Saswata Das is saying 7 ka D hai sir. Yes. 4 girls and 5 boys, you want them to sit together. So चारों गर्ल्स को एक साथ एक ग्रुप बना दो. ये गर्ल्स का ग्रुप और ये बॉयज का ग्रुप. In how many ways these two groups can shuffle? 2 factorial. Now girls can shuffle between themselves in 4 factorial ways. Boys can shuffle between themselves in 5 factorial ways. Answer is 2 factorial into 4 factorial into 5 factorial, which is nothing but 5, 7, 6, not 5, 7, 6, not. Try this. In how many ways can the letters of the word marvelous be arranged such that each letter starts with a vowel and ends with a consonant? Such that each letter of the word marvelous, in how many ways can the letters of the word marvelous be arranged such that each of these start with a vowel, ends with a consonant?
Hashtag 8 and then the answer. Okay. In how many ways can the letters of the word marvelous be arranged such that each of these starts with a vowel and ends with a consonant? 8 का A. Okay, Rajat is saying A. A is not the right answer, Rajat. देखो मार्वलस है ना. Marvelous. Okay. The word should start with a vowel and should end with a consonant. Vowel क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास vowel है A, E, O, U. Okay, and all of them are different. Okay, तो first के लिए I have four options always. Okay, now last के लिए ना you want consonant over here. Consonant में ना एक पंगा है, L repeat हो रहा है. So आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको दो केस बनाना पड़ेगा बेटा. एक केस ऐसा है जिसमें लास्ट में L है, ठीक है, when L is at an end, और दूसरा when L is not at end, when L is not at end. ओके, ये दूसरा केस. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जब हमने L को लास्ट में पुट कर दिया, इसमें एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज L. ओके, और बाकी के 2 2 4 2 6 दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 है ना. टोटल 10 है, ठीक है, टोटल 10 है. सॉरी, बीच में और दो ऐड कर दो, ठीक है. बाकी के जो है ना, दे कैन बी इन एनी ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक टॉप आगे गया, एल पीछे गया, एंड दे कैन बी इन 8 फैक्टोरियल बेस. 8 फैक्टोरियल बेस. ओके, so when L is at last, the number of ways possible is 4 into 8 factorial. Okay, now when L is not at last, top के लिए again you have 4 options. Bottom के लिए if L is not there, अगर L नहीं है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, either M, R, V और S. लास्ट के लिए 4 ऑप्शन है. एंड बाकी के लिए ना you have 8 factorial, but L is being repeated, hence 2 factorial. So इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 4 into 8 factorial upon 2 factorial. Okay, and the answer would be addition of both of them. Okay, ये आंसर वुड बी एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम. ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 टाइम्स में चला गया, ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, दैट विल गिव यू द आंसर एंड चेक इट आउट. इसमें कैलकुलेशन सोल्यूशन में कुछ अगर डाउट है तो फील फ्री टू आस्क.
this would be 3 into 4 into 8 factorial. This should be the answer. ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. I have that calculator with me. 5 factorial is 120. 120 into 6 into 7 into 8. ठीक है, and multiply this by 12. 483840. 483840. C is the right answer. शाश्वता ने बोला था C. C is the right answer. Am I clear with this? एक बार आपको L कंसिडर करना था और एक बार में L कंसिडर नहीं करना था to this question. Rajat, is it clear? Is it clear? Chalo, try this. And if you're saying E, you need to punch in the exact answer. Chalo, answer this question. E, and what's the exact answer, Rajat? 207360. इतना लंबा, इतना बड़ा. अरे आपके पास 2 मैथ बुक है. ओके, M1 M2. आपके पास 4 तेलुगु बुक है, T1 T2 T3 T4. आपके पास 3 हिंदी बुक है, H1 H2 H3. Oh no, you can consider them different. Okay, you can consider them different obviously. चलो, इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया. I want them to be together. Yes or no? Yes sir. अब ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल. इन ऑल दोज वेज ये सारे सेम लैंग्वेज वाले बुक एक साथ हो जाएंगे ना. ओके, ये सारे सेम लैंग्वेज वाले एक साथ हो जाएंगे. ठीक है, ओके. अब इसमें मैथ आपस में 2 फैक्टोरियल, तेलुगु आपस में 4 फैक्टोरियल एंड हिंदी आपस में 3 फैक्टोरियल. करेक्ट. तो दिस शुड बी द आंसर ना. इसमें कुछ डाउट है या इसमें कुछ आपको बोलना है? Now what is this? ये है 6 into 4 into 24 into 6. 36. 36 into 4 is 144 into 24. 144 into 24. Don't you think 3, 4, 5, 6 should be the answer? 3, 4, 5, 6 should be the answer. Saswata? Got it, na? Got it. Chalo. Try this. This is going to be the last question of this session. I took 6 factorial in the first. No, it's not 6 factorial.
Chalo. In how many ways 5 men and 6 women can be seated around a circle such that all the men are together? 10th. Chalo. What would be the answer to this question? चलो check this out. You want all the men to be together, ना? 5 factorial हो जाएगा. Okay. And all the men together and 6 women. तो ये टोटल 7 एंटिटीज हो गए ना. इन 7 एंटिटीज को सर्कल पे अरेंज करना है. इट इज डन इन n-1 फैक्टोरियल वेज, मतलब 6 फैक्टोरियल वेज. आंसर शुड बी 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल. Am I clear with this? Yes, sir. Let's meet at 9 p.m. in the night.